Yes, anyone is having any kind of doubts in like the portion what I've kept for tomorrow's class test? कुछ है तो पूछो वरना मैं continue करती हूँ. No, ma'am. Okay, I'm continuing with the second chapter now. 2 minutes. दो मिनट हाँ पीपीटी ओपन कर रही हूँ और स्क्रीन शेयरिंग स्टार्ट करती हूँ. बाकी के एग्जाम्स कैसे थे क्लास टेस्ट वगैरह जो भी हुए अभी तक. आज ओएस है ना. Yes, ma'am. आज हो रहा है. दो मिनट ओपन नहीं हो रहा है. क्या करूँ मैं समझ में नहीं आ रहा. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. I'm creating a new one now. Just a minute. Sorry.
Now just let me know if the screen is visible. Screen is visible to all of you? Yes. Okay. So I will be starting with the instruction set basics first. Okay. Basics means before starting the instruction set, there are a lot of basic fundamentals which you need to know, because without that you won't be able to, we will be not be able to go through the instruction set. So there are many things which we need to know. Okay. So starting with that, very important what topics I'm going to do today, because ये basic fundamentals है, क्योंकि मैं वो बेसिक फंडामेंटल्स वापस रिपीट नहीं करूंगी जब भी मैं इंस्ट्रक्शन सेट शुरू करूंगी. सो प्लीज पे अटेंशन and listen to what I'm saying. So now there can be different ways of looking to a particular instruction. So let's see how our instructions classified. We will see classification of instruction set which is based on certain points. So what are the points on which instruction set is classified? So that we are going to learn right now. So first thing on which the instruction set is classified or identified is addressing mode. Is addressing mode. Second type in which the instruction set is classified is word length. Means what is the length of that instruction. And the third type in which the instruction is classified is based upon type of operation performed. Means that instruction is going to perform which type of operation. Okay. So with respect to that, now let's see classification based upon addressing mode. Now there are 5 different types of addressing mode existing. First is direct addressing mode. Second is register addressing mode. Third is register indirect addressing mode. Fourth is immediate addressing mode. And fifth is implied addressing mode, which is also identified as implicit addressing mode. Implicit addressing mode. So these are the 5 addressing modes. So we will learn first that what are they. Okay, how do we identify an instruction looking at it, whether it is a direct addressing mode, register indirect, immediate or implied. Okay. Second type is with respect to word length. So there are 3 type of instructions with respect to word length. Instructions can be 1 byte instruction, it can be 2 byte instruction, or it can be a 3 byte instruction. And the last type is type of operation being performed. So here again we have 5 different types of addressing mode. So first addressing mode in this is data transfer operations. I'm sorry. So data transfer operation
Second is arithmetic operations. Third is logical operations. Fourth, branching group. And fifth, machine control. So these are the 5 types of operation being performed, and we are going to see the instruction set with respect to the different types only. Means first we will complete data transfer all instructions, then arithmetic, then logical, then branching, and then machine control. But before that, let us understand what do you mean by addressing mode, and then how each addressing mode will be identified, and also understand what do you mean by a word length, and then how do we identify looking at the instruction whether it is a 1 byte, 2 byte, or 3 byte instruction. So let's start with addressing mode. Now first let us understand what do you mean by addressing mode. Okay. So basically addressing mode of the microprocessor is the various formats in which the operands are specified. So basically it is various formats in which the operand is specified. So at this junction, let me introduce you what do you mean by a operand. Now coming to an instruction. Now when you look at an instruction, a whole instruction will be having 2 parts. One is mnemonic and other is the operand. As I have explained before also, this is just a brief revision. Mnemonic is nothing but abbreviations in English. So they are the meaning of that operation performed in short. Okay, in short words. Okay, whereas operand is the place or register or location where operation gets performed. Okay, okay. So if I give you an example, let's say, for example, if I write an instruction as move A comma B, then in this case, MOV becomes the mnemonic and A comma B becomes the operand. Because MOV will tell you that you are moving the data content from register B to register A. The movement, that is the copy position, will be from register B to register A. That is from year to year. Did you understand, all of you, difference between mnemonic and operand? Students? Yes, ma'am. Understood. Okay. So moving ahead, so the various ways in which we can address the operand, formats in which we can specify the operand, यानी कि operand को देख के तुम्हें समझ में आएगा कि ये कौन से टाइप का addressing mode है. That is what is nothing but a addressing mode. Okay. So let's now start with and understand these different types of addressing mode. So in that, first is direct addressing mode. Explanation will be given in notes. Direct addressing mode.
ठीक है. When the address is given directly in the instruction where the operation needs to be performed, that time we say it is direct addressing. Okay. Just like if I write an instruction as, for example, if I write an instruction as LDA F200H, ये इंस्ट्रक्शन क्या है, कैसे है, ज्यादा कंफ्यूजन मत रखना माइंड में. जब इस इंस्ट्रक्शन सेट शुरू हो जाएगा तो सारे इंस्ट्रक्शन क्लैरिफाई हो जाएंगे. अभी मैं सिर्फ तुम्हें समझने के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगी. तो एलडीए का मतलब है लोड एक्यूमुलेटर विथ कंटेंट ऑफ F200H. मीन्स F200H जो मेमोरी लोकेशन है, वो मेमोरी लोकेशन में एक डेटा कंटेंट रहेगा, 8-bit data. That data will get loaded into accumulator. That is what LDA F200H means. Load accumulator with content of address F200H. हाँ, एक बार वो डायरेक्ट का वापस एक बार डेफिनेशन बोलो ना. हाँ मैं बताती हूँ. So in direct addressing mode, generally what happens is when the address appears after opcode of the instructions or in the operand, ये operand का जगह है ना. So when an address appears in the operand, that time directly the location gets specified and microprocessor is very clear that कि हमें operation कहाँ पे perform करना है. जैसे कि यहाँ पे LDA F200H का मतलब है microprocessor understands कि F200H जो location है उससे data content लेने का है, means fetch करना है, and we have to load it into accumulator, means copy करके paste करना है. copy paste होता है microprocessors में, it is never cut paste. It is copy paste. So data content of F200 will get loaded into accumulator. So basically direct addressing mode is that addressing mode where address appears directly in the operand. तो ये जो operand की जगह है वहां पे address directly आ जाता है. मैं बाद में ये पूरा explanation, अभी जो मैं explanation दे रही हूँ, this is through the technical words point of view. syllabus के हिसाब से मैं पढ़ा रही हूँ तुम्हें. फिर मैं तुम्हें hints भी दूंगी, shortcuts बताऊंगी कि एक्चुअली वो मेरे हिसाब से है, एक्चुअली कैसे आइडेंटिफाई करता है इंस्ट्रक्शन को देख के कि ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है या रजिस्टर है, तो वो आइडेंटिफिकेशन में बताऊंगी. इज डायरेक्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स? Yes. नेक्स्ट एड्रेसिंग मोड इज रजिस्टर एड्रेसिंग मोड. ठीक है. Now in register addressing mode, for example, the same instruction I'm taking, move A, B. Now what was this instruction doing? This instruction is copying content of B to A. B का content is getting copied into A. Okay. Or if I write an instruction as add B, so your content of B is getting added to content of A and the result is stored in A. Okay. Or you can say subtract C. Means register C content will get subtracted from A and result is stored in A. Because all arithmetic and logical operations, one of the data always will be in accumulator and result is stored in accumulator. That is by default. So when the operations are performed between any registers, that time it is identified as register addressing mode. Okay. Now registers will be which registers? So basically when we say registers, that register is going to be A register, B register, C, D, E, H, L. Okay. A, B, C, D, E, H, L. So any one of these registers, if these name reflect in the operand, that time it will be identified as register addressing mode because the operation is taking place between the registers. Did you understand, all of you? Yes, ma'am. कुछ confusion है तो पूछो.
एड्रेसिंग मोड 1 बाइट 2 बाइट किसी चीज के लिए कुछ डाउट मत रखना, मन में पूछ लेना कभी का कभी, ठीक है? कैन आई प्रोसीड? यस मैम। क्या हुआ कैफ, तो इतना दुखी क्यों है आज कि टाइम नहीं मिल रहा है पढ़ाई के लिए, ओएस के लिए? ऐसे नो तो मैम मैम, वो लेक्चर लेती ही डायरेक्ट, नहीं है। नो डायरेक्ट पे मैम तेरी वो गाड़ी अटकी एक्सप्रेशन। है? अच्छा। यस मैम। हाँ, तो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में अगर ये LDA F200H इंस्ट्रक्शन मैंने लिखा, वैसे ही अगर मैं लिखती हूँ STA F300H, तो STA LDA का अपोजिट है, यानी कि स्टोर एक्यूमुलेटर कंटेंट्स टू लोकेशन F300H। तो ओपर एंड में ना एड्रेस आता है। अभी वो किस तरह से माइक्रो प्रोसेसर में एंटर होगा वो मैं बताऊंगी तुम्हें धीरे धीरे करके। अभी नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है 1 बाइट 2 बाइट 3 बाइट उसमें आएगा, एट अ टाइम मैं नहीं सब बता रही हूँ, आई एम गोइंग स्टेप वाइज। तो जब भी अभी अभी फिलहाल के लिए क्या ध्यान में रखना, जब भी ओपरेंड में एड्रेस आता है, whenever address is given directly where the operation involved is taking place, जैसे कि STA F300 में accumulator content F300 में स्टोर होगा, और LDA F200 में डेटा कंटेंट ऑफ F200 एड्रेस इज गेटिंग स्टोर्ड इन एक्यूमुलेटर। उल्टा, एग्जैक्टली अपोजिट प्रोसेस है। ओके, तो ये मैंने मीनिंग बताया इंस्ट्रक्शन का, बट एक्चुअली रीजन क्या है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का, कि इन द ऑपरेंड द एड्रेस अपीयर्स। अंडरस्टूड मैम। ओके, नेक्स्ट इज यस मैम। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, लेट्स से। ठीक है, नेक्स्ट इज इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। तो immediate addressing mode में the 8-bit data processed, also it can be a 16-bit data at times for some instructions, that is given via program. That time it will be identified as immediate addressing mode. Means like, I will, for example, I will tell you, move immediate A comma 56H. Means you are copying the content 56 to accumulator, and this 56 will be given via program. How that I will tell you. Okay, when you enter the opcode, that time it will be given with the opcodes. Okay, same way, if I say ADI 01H, ADI 01H का मतलब है add immediate 01H to accumulator and store the result in accumulator. तो तभी यहाँ पे ये जो 01H है, this is added via program to the accumulator and result is stored in accumulator. So that time it is immediate addressing mode. So when the data to be processed is given via opcodes of the instruction, that time they are specified as immediate addressing mode. So here what comes is data. Did you understand immediate addressing mode, all of you? Ma'am, can यस you मैम। repeat the definition? यस मैम प्लीज। Immediate addressing, वो ये तुम लोग लिख रहे हो क्या? किधर लिखो मत, ये नोट्स मैंने शायद डाला हुआ है। Just a minute, मैं बताती हूँ मैम तुम्हें। बट फिर भी वो लाइव एग्जांपल्स याद रहता है ना, वो आप अभी जो बता रहे हो इसके लिए। Okay, just for the people who don't know, I'm showing them. हाँ, मैं बताती हूँ, I will repeat the definition. यूनिट 2 में मैंने ये पूरा इंस्ट्रक्शन सेट अपलोड किया है, 2 हाफ्स में है।
नहीं आ रहे, पता नहीं। Anyway, it's not coming. We will see at the end of the lecture आता है क्या. Okay. So basically, immediate addressing mode is that addressing mode where the data appears immediately after the opcode of that instruction. Where the data appears immediately after the opcode of that instruction. So data which is to be processed basically goes via hex code of the program or opcode of the program. Clear? Can I move ahead? यस मैम, डन. Can I move ahead? यस मैम. मैम ठीक वो है. आपने Implicit एलडीए, addressing mode और implied addressing mode. हाँ. आपने वो एलडीए और LDA एसटीए के बोलो, बीच क्या में क्या LDA फर्क का? बताए थे? LDA का मतलब है लोड एक्यूमुलेटर, यानी कि F200H का कंटेंट एक्यूमुलेटर में लोड होगा. लोडिंग मींस कॉपिंग. लोड का मतलब है कॉपी. लोड या माइक्रो प्रोसेसर लैंग्वेज है. असली जो मीनिंग है उसका वो है कॉपी. वैसे ही स्टोर एक्यूमुलेटर कंटेंट्स टू एड्रेस F300H मींस STA. तो यहाँ पे उल्टा होता है. एक्यूमुलेटर कंटेंट्स कॉपी हो जाता है लोकेशन F300 में. अंडरस्टूड मैम. मींस इसका जो कंटेंट है इसमें बेसिकली implicit addressing mode या implied addressing mode. Now whether it is STA, LDA या मैम फिर move, add, subtract. हाँ. मैम मैम डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड और इमीडिएट एड्रेसिंग मोड सेम लग रहा है ना? मीन्स उसमें भी वो 53F300H एक्यूमुलेटर में जाता है, फिर या अभी उसमें हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे वो मैं तुम्हें लूप होल ये इसमें बताऊंगी मैं. क्या बोलते हैं, तो आई विल गिव यू शॉर्टकट्स टू रिमेम्बर दैट. आई विल टेल यू लॉजिक टू रिमेम्बर दैट कि वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं. डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं वो मैं बताऊंगी. आई विल कम टू दैट पॉइंट सब खत्म होने के बाद. ओके ठीक है, मैम. तो ओके. तुम्हें समझ में आएगा. Implied addressing mode या implicit addressing mode is the instructions which are performed only and only on accumulator. Okay, 99% of the time, 99% because एक दो ऐसे है कि जो accumulator पे execute नहीं होते फिर भी वो implied है. तो 99% of the time the operand, 99% of the time the operation performed will be on the accumulator alone. So implicit addressing mode में there is no operand specified. The meaning of the execution of the instruction is already predetermined. The meaning or the operation which is going to be performed by the instruction is already predetermined. यहाँ के कैसा operation predetermined नहीं है. यहाँ पे हम लोग दे रहे हैं. यहाँ पे हम लोग दे रहे हैं. तो implied addressing mode या फिर implicit addressing mode में जैसे मैंने अगर एग्जांपल दिया RRC, इसे पहली बात तो ओपरैंड नहीं है और ये आरआरसी सिर्फ और सिर्फ एक्यूमुलेटर पे प्रोसेस होता है. जैसे कि अगर मैंने मूव ए कमा बी का एक्चुअल इंस्ट्रक्शन लिखा तो एक्चुअली इंस्ट्रक्शन जैसे हम पढ़ेंगे ना वो इस तरह से रहेगा. मूव आरडी कमा आरएस. आरडी का मतलब है डेस्टिनेशन रजिस्टर, आरएस का मतलब है सोर्स रजिस्टर. तो यहाँ पे आरडी और आरएस वेरी हो सकते हैं. जैसे कि इसका मुझे मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस मिलेगा, जैसे मूव ए कॉमा बी, मूव ए कॉमा सी, मूव
A, D एंड सो ऑन, बहुत सारे मिलेंगे ऐसे करके मुझे। ओके, फिर मैं मूव B, A, B, C, B, D, B, E, B, H, B, L, वैसे ही मूव C, A, C, B, C, D, C, E, C, H, C, L, ऐसे बहुत सारे मुझे इंस्ट्रक्शन मिल जाते हैं, बट कॉमन उसका इंस्ट्रक्शन ये है। और इसका मीनिंग क्या है कि सोर्स रजिस्टर कंटेंट्स डेस्टिनेशन में कॉपी करो, कॉपी पेस्ट ऑपरेशन है ये। यानी कि यहाँ पे जो ऑपरेंड स्पेसिफाई होगा उसके हिसाब से कॉपी किया जाएगा कंटेंट्स फ्रॉम one register to another register. So here it is not predetermined. Here whatever the user will specify, if the user says move H, A, then A content will get copied to H. बट ऐसा आरआरसी में नहीं होता है। आरआरसी के लिए हम ऑपरेंड लिखते ही नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी इसका ऑपरेशन प्री डिटरमाइंड है। आई विल राइट डाउन ओवर हियर। Operation is predetermined. Okay, so we don't write any operand for that operation. ठीक है, तो आरआरसी का मतलब है रोटेट एक्यूमुलेटर राइट विद कैरी विदाउट कैरी, उसमें काफी सारे टाइप्स आते हैं। राइट नाउ आई एम नॉट एलाबोरेटिंग। सो आरआरसी का बेसिक मतलब है रोटेट एक्यूमुलेटर राइट। तो ऑपरेशन नहीं यहाँ पे कहाँ पे परफॉर्म करना है वो देने का जरूरत नहीं है, जैसे कि ऑपरेंड देने का जरूरत नहीं है, बिकॉज ये सिर्फ और सिर्फ एक्यूमुलेटर पे ही होगा। तो सच इंस्ट्रक्शंस आर आइडेंटिफाइड एज implicit or implied addressing. Is this clear to all of you? Students? यस मैम, समझा बट थोड़ा। समझा बट थोड़ा तकलीफ है। अभी जब इंस्ट्रक्शन शुरू होगा तो तुम्हें थोड़ा थोड़ा आइडिया आएगा ये सब चीजों का। सारी चीजें मैं शायद एग्जाम से नहीं बता पाऊंगी, बिकॉज वो जो भी परफॉर्म करके बताऊंगी तो ही आइडिया मिलेगा। जैसे अभी सब्ट्रैक्ट सी का भी एक्चुअल इंस्ट्रक्शन है सब्ट्रैक्ट आर। अभी ये आर चेंज हो सकता है। ये आर क्या है? ये रजिस्टर ए हो सकता है, बी, सी, डी, एच, एल, यानी कि वी कैन हैव सो मेनी इंस्ट्रक्शन, सब्ट्रैक्ट ए, सब्ट्रैक्ट बी, सब्ट्रैक्ट सी, सब्ट्रैक्ट डी, सब्ट्रैक्ट ई, सब्ट्रैक्ट एच, बट एक्चुअली उनका कॉमन इंस्ट्रक्शन क्या है? सब्ट्रैक्ट आर। तो ये आर वेरी हो सकता है। तो यहाँ पे ऑपरेशन जो परफॉर्म हो रहा है ऑपरेंड के हिसाब से वो वेरी हो सकता है। So subtract R is not predetermined operation. It is to be determined depending upon the operand which we specify. So if we write subtract E, then E register content will get subtracted from A. तो यहाँ पे R vary होगा, बट वैसे RRC का नहीं है। RRC के यहाँ पे कुछ भी operand नहीं लिखा है, ये सिर्फ और सिर्फ accumulator में ही एग्जीक्यूट होगा। तो ये फिक्स्ड है। यहाँ पे ऑपरेशन फिक्स्ड होते हैं, वेरी नहीं हो सकते हैं। जैसे कि बाकी सब तो ऑपरेशन ले लो, जैसे कि एडीआई का एक्चुअल इंस्ट्रक्शन है एडीआई डेटा, यानी कि एड इमीडिएट द डेटा स्पेसिफाइड टू एक्यूमुलेटर। तो वो डेटा कुछ भी हो सकता है। मैंने अभी यहाँ पे 01 स्पेसिफाई किया, जैसे मेरा प्रोग्राम लॉजिक होगा उसके हिसाब से मैं ये 01 निकाल के आई कैन राइट इट एज एडीआई 45H। तो 45 विल गेट एडेड टू एक्यूमुलेटर एंड रिजल्ट विल बी स्टोर्ड इन एक्यूमुलेटर। तो ये बाकी के सारे इंस्ट्रक्शंस में जो इम्प्लाइड नहीं है उनमें वेरिएबल्स आते हैं डेटा के लिए या रजिस्टर्स के लिए। इम्प्लाइड में वेरिएबल नहीं आता है, इम्प्लाइड में ऑपरेशन फिक्स्ड है। अगर आरआरसी है तो वो एक्यूमुलेटर पे ही होगा। समझा मैं क्या बोल रही हूँ अभी? नो। कि अभी भी नहीं क्लियर? ओके, अभी सबसे इंपॉर्टेंट रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, बट उसके लिए मुझे कुछ बताना पड़ेगा। तो let's understand most important basic of the microprocessor. Most important.
Just a moment. Huh? मैं कुछ बता रही हूँ, ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ के लेना, बिकॉज वरना प्रोग्राम जब भी शुरू करूँगी तो तकलीफ होगा। इसके लिए स्पेशली थोड़ा अलग तरीके से डिजाइन करके बता रही हूँ। लोग को लगेगा कि ये क्या मैथ टीचर है, क्या कर रही है। थोड़ा कलर्स रहेगा तो दिमाग में अच्छे से बैठ जाता है। That's why I ठीक है। So what I have drawn is memory location, means memory बता रही हूँ। So what I'm doing right now is memory. हमारा जो सारा प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट है वो मेमोरी के हिसाब से है। हमारे पास कोई स्क्रीन आने नहीं वाला है, जैसे C++ में आता है ब्लू कलर स्क्रीन on which we type the syntax and write down the code. So nothing such kind of thing is going to come over here. So this is memory. And specifically I'm talking about RAM memory, that is user memory. ठीक है, which starts from C000 location onwards, and this is the data in that memory. So ये एड्रेस फील्ड है और ये डेटा फील्ड है। ठीक है, ग्रीन कलर एड्रेस फील्ड है, पिंक कलर डेटा फील्ड है। तो जैसे C000 एड्रेस में कुछ तो डेटा यहाँ पे रहेगा, 8 बिट डेटा। हाँ, ऐसे करके काफी सारे एड्रेसेस आएंगे। Now whenever you have been asked to add two numbers, subtract two numbers, multiply numbers, arrange the numbers in ascending order, arrange the numbers in descending order, then swap the numbers between two locations, कुछ भी तरीके का अगर प्रोग्राम तुम्हें आया, then always and always the input is given into the locations. Okay, how you work with C++ program? How do you work with C++ program? Tell me. Where do you get the input from? From the user, or it can be static also. It can be given in the program, right? Or it can be asked to the user, right? ये दिखाई दे रहा है program? Student, are you able to see? हाँ मैम, दिख रहा है ब्लू स्क्रीन। हाँ, so ये ascending program है, ठीक है? Arrange the sort the numbers in ascending order, bubble sort method से। तो जैसे मान लो अगर मैंने ये प्रोग्राम रन किया, ठीक है, तो यहाँ पे आया enter 10 numbers to be sorted in ascending order. Is everybody able to see that? Yes, ma'am. यस मैम। तो ये जो ब्लैक स्क्रीन है C++ का, ये क्या है? ये यूजर इंटरफेस है ना, टू एक्सेप्ट द डेटा एंड ऑल्सो टू शो द आउटपुट। और जो तुम्हारा ब्लू स्क्रीन था वो क्या है?
वो तुम्हारा कोडिंग स्क्रीन है, जहाँ पे तुम प्रोग्राम कोड लिखते हो, where you write down the program code. So here, let's say I'm entering 10 numbers to be arranged in ascending order. Okay, 8, 6, 4, 5, 33, 55, 2, 8, 4, 4, 4, 32, like that. So पहले unsorted array आया. So this is my output. Unsorted array is 8, 6, 4, 5, 33, 55, 2, 8, for 444, 32. And this is a sorted array. 2, 4, 6, 8, 8, 32, 33, 35, 444. So this is my output what we have got. So on this black screen only all the interface took place. Means we asked the user for entering the data, it got sorted into the program, which was your blue screen, and it has shown you output on the black screen again. Did you understand what I am saying, trying to say? This is much higher level language. What we spoke about right now is much higher level language. But what we are going to see in 8085, it was all started with 8085. It all started with 8085. So that time there was no such privilege given to us. What is given to us? RAM memory. अभी ये RAM memory में ही हमें program load करना है. यही RAM memory है जहाँ पे हमें inputs load करना है. यही RAM memory है जहाँ पे हम output show करेंगे. So everything is going to be done with respect to memory. So please understand the concept nicely. So हम कोई address location choose करेंगे. Let's say I choose the address location as, for example, let's say I choose the address location as what happened? Correct? Oh, funny. I don't know what has happened. Just a minute. I'm closing the PPT and starting. It's not reacting to the tab. Two minutes. I'm sure stopping the screen share. I'm seeing what is exact the problem. कुछ भी react नहीं हो रहा है. Is everybody able to see the screen? Yes.
अभी आया, receive. So let's say we choose a address location to load the program. So for example अभी मैं common रखने वाली हूँ, तो I'm going to choose the address location as F000. तो यहाँ से मैं hex codes upload करना शुरू कर दूंगी, F000, F001, 02 and so on. So this is address and this is the data, that is the opcode which I will load from this address onwards. So this is my program memory या फिर program memory location let's say. हाँ, वैसे ही मुझे एक कुछ सिलेक्ट करना पड़ेगा एज इनपुट और इनपुट्स मेमोरी लोकेशन where I will upload the inputs. Let's say I am choosing a location as F200H. I'm going to add two numbers. So one number I keep it in location F200. Second number I keep it in location F201. So this is the first number, this is the second number, whichever they are, and then I need to add both of them. And then save the result as, then I have to designate some output location. Then I have to designate some output location. So output locations, I'm designating let's say as F550. तो यहाँ पे मैं sum store करूँगी addition का, और let's say F551 location में मैं carry store करूँगी. Did you understand up till here what I have said? Yes, ma'am. हाँ, तो यानी कि जब भी ऐसे ही होने वाला है पूरा 885 प्रोग्रामिंग में, whatever data will be given to you for executing the program, that is always there in some location. You are supposed to access that location, take the data from that location into the registers, process the data depending upon what is operation being performed, and then store that output in output location. तो बेसिकली जब भी तुम प्रोग्राम करोगे 8085 का, तो उसमें ये स्टेप्स, बेसिक स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे. ये जो मैं सारी चीजें बता रही हूँ, ये सब बेसिक फंडामेंटल्स है, ये किधर भी लिखा नहीं है, तो तुम्हें समझ के लेना है. That's why I'm making it a point that I'm writing all these things. So basically, whenever you have to perform execution of 8085 program, execution भी is not a right word because वो mechanical हो जाता है. Whenever you have to write an 8085 program, I will say. You have to write an 885 program because पहले तो हम लिखेंगे फिर उसका mechanical execution होगा किट में. So whenever you have to write an 885 program, you have to understand that writing will take place. The whole program will have three sections. First, retrieving the inputs. Second, processing the data. Third, loading the output in output location. So, इसमें parts आएंगे. हाँ? So, part 1 of the program to be written will be what do you say? Retrieving the inputs from input locations. इसका part 2 will be processing the data
that is nothing but inputs as per aim of the program. That means what is the task given to you. Okay? And part 3 will be to upload the processed data, that is output, in specified output location. ये जो locations होते हैं वो aim में दिए होते हैं 99% of the time. Whatever locations where you are supposed to take the data, what kind of operation you are going to perform and where you are supposed to load the output, ये सारे चीजें aim में आती है. In aim it will be given to you, aim of the program, a question of the program. Okay, so अभी basically सारा जो खेल है वो memory location का है. Retrieving the inputs from input location means you have to access input locations. प्रोसेसिंग तो हम लोग लॉजिक के हिसाब से करेंगे प्रोग्राम में, बट अपलोडिंग द process data that is output into specified location means you have to access output locations to do that. तो अभी एक्सेस किस चीज से होता है? So for that 8085 is giving us one privilege. Let's see what is that privilege. The privilege is whichever address appears or gets loaded into HL register pair, then the data in that address is called as memory pointer. ये बहुत ही important concept है because तुम्हारा जो पूरा programming concept है it revolves around this M, memory pointer M. So M का मतलब क्या है? Whichever address appears and gets loaded into HL register pair, the data in that address is called as memory pointer M. So let's say if I upload HL register pair with the input locations F200H, then this first data in it will become M, memory pointer. And then by using M in the operand, you can access that data. Did you understand this concept of M? All of you, did you understand? Students? Hana, Yes, ma'am. there's two types of answers which will exist for this, either yes or no. I'm okay with any answer. If it is yes, I will proceed ahead. If it is no, I will repeat again. It is as simple as that. But you just cannot keep quiet. That is not the answer. That is not acceptable. No, ma'am. हाँ, तो ऐसे बोलो. अभी अभी ये यहाँ तक तुम्हें समझ में आया ना कि अगर हमें कुछ प्रोग्राम लिखना है तो जो भी प्रोग्राम अपलोड होगा वो मेमोरी लोकेशन में अपलोड होगा, इनपुट्स भी मेमोरी में दिए जाएंगे और आउटपुट Yes, भी ma'am. मेमोरी लोकेशंस में आएंगे. मींस तुम्हें कहाँ ना कहाँ पे तो एट एवरी जंक्शन यू हैव टू एक्सेस मेमोरी लोकेशन ना. मेमोरी लोकेशन में जाके उसका डेटा तुम्हें एक्सेस करने आना चाहिए. एक्सेस का मतलब क्या है? either to read the data in from that location or to upload any kind of other data into that location. either वो लोकेशन में तुम्हें रीड करने आना चाहिए वो डेटा क्या है, या फिर तुम्हें अपलोड करने आना चाहिए, यानी कि नया डेटा लोड करने आना चाहिए. तो ये दोनों चीज के लिए एक ही चीज काम आता है. पूरा माइक्रो प्रोसेसर में एक ही चीज हमें दिया है. माइक्रो प्रोसेसर ने प्रिविलेज दिया है एम का. व्हाट इज एम? ओके, व्हाट इज एम?
What is M? In simple words, M is memory pointer. Whose M is memory pointer. 2 minutes, excuse me. I'm sorry. So memory pointer. Memory pointer is, it is that data whose address is stored in HL register pair at any given instant. यानी कि कौन से पर्टिकुलर पार्ट में, पोजीशन में, कहाँ पे, किस वक्त पे तुम उसे एक्सेस कर रहे हो. So memory pointer M will be basically that data whose address will appear in HL register pair. तो HL register pair में जो भी एड्रेस आएगा, जैसे मान लो एड्रेस आया F200H और F200H में डेटा था 85H, तो ये 85 बनेगा मेमोरी पॉइंटर. So when you actually say, let's say you write an instruction as move A, M, तो move A, M का मतलब है M क्या है? M is that data whose address is in HL register pair. So what will microprocessor do? It will go to F200H. It will go to HL register pair. HL register pair में क्या address है? F200. Then it will go to F200, see what is the data. Data is 85. Then it will upload that 85 into accumulator. So after execution of this, accumulator content will be 85H. Did you understand what do you mean by M? Yes, ma'am. अभी समझा सब लोगों को कि अभी भी नहीं समझ में आया? Yes, ma'am, understood. So जब भी मैं M अंडरस्टूड बोलूंगी, मैम. जब भी M बोलूंगी तो ये क्या ध्यान में आना चाहिए? ये जो मैंने लिखा है, इट इज दैट मेरे डेटा कंट्रोल. हुज एड्रेस इज स्टोर्ड इन HL रजिस्टर पेयर. अभी मैं ये हर रोज पूछूंगी बिकॉज हमारा पूरा जो प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट है वो M के अराउंड रिवॉल्व होता है. बिकॉज हम एक्सेस सिर्फ, और ये सिर्फ प्रिविलेज HL रजिस्टर को ही है, BC या D रजिस्टर को नहीं है. दिस प्रिविलेज इज ओनली टू HL. Whichever address is there in HL, data of that address is M. This particular privilege is not given to D register pair or BC register pair. You have to remember that also. Only and only HL. सिर्फ HL. ठीक है? So now we go to the last type of addressing mode, that is register indirect addressing mode. So register indirect addressing mode is that addressing mode which involves operations associated with M. हाँ, तो फॉर एग्जाम्पल इफ वी राइट मूव B, M, तो उसका मतलब है वो क्या करना पड़ेगा? अभी M आया, तो M आया तो माइक्रोप्रोसेसर इज ऑलरेडी प्रोग्राम. द मोमेंट इट सीज M in the operand, what it will do? It will go to first HL register pair. See what is the address in HL. Then it will go to that address in the memory. See the data, and then that data will get copied to B. ठीक है? तो ये क्या हो जाता है? ये इनडायरेक्ट प्रोसेस हो जाता है ना, कि जो हम सीधा वाला खा सकते हैं वो उल्टा खाएंगे, उल्टे हाथ से. ऐसे हो गया ये. Means there is a easy way of doing this, but it has been given in an indirect way. Like so, if we have to access the data in any location, then here it is accessed with respect to M. So M के लिए हमें वाया जाना पड़ता है. For accessing M, first you have to access HL. Then read the content of HL, which is the address. Go to that address, check the data. तो ये indirect process हो जाता है. That's why the name register indirect addressing mode. Is this clear to everyone? यस मैम. Okay.
now I will be giving you hints. अभी मैं हिंट्स दूंगी, वो हिंट से तुम्हें एकदम इजी लगेगा, बट मैं सारा टाइम तो हिंट्स नहीं दे सकती हूँ ना, मुझे तुम्हें टेक्निकली भी बताना पड़ेगा कि उसका मीनिंग एक्चुअली क्या है. So let's see the easy way of identifying the instruction with respect to these hints. तो इसका हिंट है, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का हिंट है 16-bit address appears in the operand. तो जब भी operand में 16-bit एड्रेस आता है तभी वो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है. हिंट ऑफ रजिस्टर एड्रेसिंग मोड है whenever R appears. R का मतलब क्या है? It can be any one of the registers A, B, C, D, E, H, L, any one of these 7. So whenever R appears in the operand, it is register addressing. ठीक है. इमीडिएट एड्रेसिंग मोड का हिंट क्या है? सबसे इजी, I is there in the mnemonics. That is how you identify and differentiate between direct and immediate addressing mode. इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में हमेशा I स्पेसिफाइड रहेगा निमोनिक्स में, जैसे MVI मूव इमीडिएट, ADI एड इमीडिएट, तो उनके निमोनिक्स में भी I रहता है. तो अगर निमोनिक्स में I है देन इट इज इमीडिएट एड्रेसिंग मोड. या फिर ऑपरेंड में 8-bit और 16-bit डेटा इन ऑपरेंड. दैट इज द हिंट. इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड का हिंट है नो ऑपरेंड. इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड में कभी भी ऑपरेंड नहीं रहता है, बिकॉज वो ऑपरेशन प्री डिटरमाइंड है, वो फिक्स रहता है कि ये इसी के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होगा. So there is no requirement of any operand. That's why no operand. So no operand ये hint बन जाता है. Few cases में applicable नहीं है, but 99% of the time applicable है ये hint. And the last one is very easy. When operand has M, it is register indirect addressing mode. Why? Because M stands for memory pointer. And जो भी instruction memory pointer के हिसाब से लिखा गया है, involved है, that means there is an indirect way of accessing the data. Memory pointer के लिए always we need to access HL, then read address in HL, then go to that address and check the data. So it becomes an indirect way. So register indirect addressing. That's why whenever there is a M in the operand, it will be register indirect addressing. Is this clear to all? Yes, ma'am. Okay. अंडरस्टूड मैम. ओके. वॉइस का कभी है एग्जाम? इवनिंग मैम. अभी 12 बजे नहीं है? 12 o'clock. क्या हो गया तुम्हें? 12 बजे Yes, है ना? ma'am, it's at 12 o'clock. क्या? मैम वो अनऑफिशियल पे कोई तो बोला कि 5 बजे शाम को करके. सॉरी. क्या कुछ भी मीन्स 12 बजे एग्जाम है, तुम लोग चुपचाप एग्जाम लिखो 12 बजे. ठीक है. तो मैं एक्चुअली वर्ड लेंथ मुझे शुरू करना था, बट अभी मैं नहीं करूंगी. यू टेक अ ब्रेक, यू नीड अ ब्रेक टू रिवाइज एंड मे बी टू रिलैक्स फॉर सम टाइम एंड देन यू गिव द Yes, एग्जाम ma'am. एट 12 o'clock. ठीक है. अभी कल का बात सुनो मेरा 2 मिनट. आई विल स्टॉप रिकॉर्डिंग.